Hello friend, my name is Rakesh Gupta and this is my fifth video on HTML. In the previous video, we show you some basic of HTML like HTML text formatting and comments on HTML. So if you are watching first time in this series of video, please watch the previous video of this series so that it could be easy to understand. So today topic is CSS. So what is CSS basically? CSS stand for Cascading Style Sheet is used to format the layout of web pages. CSS क्या है? CSS बेसिकली एक डिज़ाइनिंग टूल है, स्टाइल शीट है, जिससे हम अपने क्या करते हैं वेब पेजेस को इन्हांस करते हैं, मतलब उसको डिज़ाइन करते हैं, लेआउट करते हैं अपना वेब पेजेस को. ठीक है, तो उससे हम लोग CSS में और क्या कर सकते हैं. हम लोग CSS का मतलब कुछ ऐसे कलर चेंज कर दिए, फॉन्ट का शेप चेंज कर दिए, उस फॉन्ट का साइज चेंज कर सकते हैं, स्पेसिंग बिटवीन एलिमेंट कर सकते हैं, हम लोग मार्जिन दे सकते हैं. बेसिकली हम लोग CSS से हम लोग बहुत कुछ अपना टेक्स्ट वेब पेज का हम लोग डिज़ाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो बेसिकली इन CSS इन HTML डॉक्यूमेंट वी कैन इम्प्लीमेंट और ऐड CSS इन 3 वेज. हम लोग HTML डॉक्यूमेंट हम लोग CSS कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये हम देखते हैं. 3 वेज में पहला क्या है, इनलाइन CSS, सेकेंड इंटरनल CSS एंड थर्ड एक्सटर्नल CSS. तो फर्स्ट व्हाट इज inline CSS. तो बेसिकली inline CSS is used to apply a unique style to a single HTML element. कि inline CSS हम लोग यूज़ करते हैं, अप्लाई करते हैं, एक यूनिक स्टाइल रहता है जो हम लोग सिंगल HTML एलिमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं. मतलब हम लोग एक लाइन HTML एलिमेंट है हम लोग CSS यूज़ करते हैं, उसको हम लोग inline CSS कहते हैं. ठीक है, तो यूजिंग स्टाइल attribute inside HTML element we can apply inline CSS on them. So now we look some basic example of inline CSS. So open editor. Here we are using some basic syntax such as heading, paragraph and label elements. Now I am using some basic inline CSS. So I am using style. Then I want to change the color of font. So I am color. Then I am taking red and close this, save this and open in browser. So here is my here the heading tag has changed color. Here heading tag is in color. Now look also here in body style background color. I am taking blue as a background color. So here the web pages is blue in background. So inline CSS used in a specific element. Here we are in body tag we are using single style. Then in heading we are using single CSS. So inline CSS basically using a single element. Now in paragraph I am taking another, that is style tag. Then I am giving font size, I am giving a 30px. Save this and refresh this page. Here the size of paragraph is increased. So basically inline CSS is using single element. It is clearly. Now we go to another topic, that is internal CSS. Basically internal CSS is used to define a style for a single HTML page. इंटरनल CSS क्या है? बेसिकली इंटरनल CSS वो है जिसको हम अपने हेड सेक्शन में स्टाइल टैग को हम लोग डिफाइन करते हैं फॉर ए पार्टिकुलर टैग. ठीक है, जैसे हमको यहाँ पे इन दिस आई वांट टू इन हेडिंग टैग एंड इन पैराग्राफ आई वांट टू सेम कलर. Basically in inline CSS we use
different style on each element, but here I am doing red. Color red, here output should be red. But in external CS, internal CSS, we डेफिनेटली हम लोग एक ही जगह हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. सच लाइक इन हेडिंग और पैराग्राफ वी यूज बोथ color font color should be red. So here coding should be done in single line but used in multiple elements. So now I am using some basic example of internal CSS. So first here I am removing now in internal CSS. Firstly, in header file we must declare an internal CSS is defined in head section of an HTML page within a style element. हम लोग अपने internal CSS को हम लोग head section में define करते हैं within a style tag. ठीक है, style element में. So here we should implement a style tag. Here types should be not mandatory, but you can use them. Here I am using body for defining color. I am taking background color should be blue. ठीक है, blue. Then close this, and now we again take in paragraph. Here we used multiple paragraph. So Control C, Control V. Save this. Now check the output. Here background color will be same, and now in paragraph we are taking two paragraph, but we should write one coding in them. Here we are using single CSS in internal CSS. So here our coding should be in a single line, but we use in multiple elements, so it is beneficial for writing internal CSS. Now we take another example of in heading tag we use font size 60 px. Now check this output, refresh the page. Here font size should be increases. So basically in the following example we can change multiple or enhance the HTML element using CSS. So we now go to another topic, that is external CSS. So basically what is external CSS? An external CSS style sheet is used to define the style for many HTML pages. अब external CSS क्या है? एक्सटर्नल CSS वो है जिसको हम एक बार कहीं पर स्टोर, मतलब एक बार डिज़ाइन हम कहीं पर लिख देते हैं, CSS कोड कर देते हैं और उसको हम बार बार हर एक पेज के लिए हम कॉल कर सकते हैं. ठीक है, उसमें हमको बार बार CSS को लिखना ना पड़ता है, नहीं लिखना ज़रूरत पड़ता है. ठीक है, टू यूज़ एन एक्सटर्नल स्टाइल शीट ऐड टू लिंक इन द हेड सेक्शन ऑफ HTML प्रो. हम लोग कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं स्टाइल शीट में? हम लोग बेसिकली उसको लिंक कर सकते हैं इन द हेड सेक्शन ऑफ HTML पेज. So now we take example of external CSS. For here we should copy all this CSS and close all this and save. And now we can again open another tab
save this file. I am saving in a styles or CSS. Style 1.css. Now in head section we should link. Here I am linking this page. Link href. We already declare what is href. Here we will pass the link of this style sheet. So I am using a style 1. So now save this page and refresh this. Here all same things is done. No any difference. Now we go to page source for any confusion dot or so that is ये पेज में है या फिर नहीं है, हम लोग देखते हैं एक्सटर्नल CSS को. Here the declaration of CSS is not shown here, but in style CSS all are given. So external CSS are used for multiple web pages should be designed on a single CSS. Okay. Here we are defining CSS in HTML. Here we are showing some basic CSS and types. In another video we will explain advanced version, advanced or elaborate of the CSS in CSS section videos. So if any doubt or any queries, please comments me in comment section, and please like and subscribe my channel. Thank you.